Hello, Mathaji, and watching on TV's Prime Time. 3 people were killed and 7 others injured after a landslide in Kerala's Wayanad on Tuesday. The Indian Meteorological Department issued a red alert for the district. The landslide, which occurred at Kalladi near Mipari, hit a tunnel project underway, tapping several workers. 7 of them still remain missing. PTI news agency reported citing Chief Minister V.D. Sadeshan. Kerala Health Minister K. Muralidharan told ANI news agency that at least 2 people had died in the incident. The workers were employed for a tunnel road project connecting Malappuram and Wayanad districts. According to officials involved in the rescue mission, it is an unfortunate incident. Rescue efforts are going on, Sadeshan said while speaking to reporters. ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് 18 പേരാണ്. അതിൽ 18 പേരും വസ്ത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 9 പേര് മേപ്പാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഒരു ബോഡി കുറച്ച് മുമ്പ് ലഭിച്ചു, വൈത്തിരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബോഡി HML ക്ലിനിക്കിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നത്. ഇവരെ 11. ബാക്കി 7 പേരുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ JCB, കിറ്റാച്ച്, ടിപ്പർ ഉൾപ്പെടെ ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെസ്ക്യൂ ടീം എല്ലാ വകുപ്പ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും എല്ലാവരും എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. ഓടി കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ ഇടിഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ട് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്ട് ചെറുതായി ആ സിമെന്റ് അവർ കെട്ടി വെച്ചൊരു പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ കുറച്ച് ഇടിഞ്ഞു, മിനിഞ്ഞാന്ന് കുറച്ച് ഇടിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ചെറുതായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്ത് ഓടി വന്ന സമയത്താണ് ഈ മണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് വന്നത് ഒന്നാകെ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വന്നോളിയാണ്. അപ്പൊ കുറെ ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മണ്ണ് വരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓടിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ പാലത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്ന ടാങ്കർ ലോറി അടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ട് വന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓടി കുന്നുമ്പ് കയറി വേറെ റോഡിനെ പോയി. അപ്പോഴാണ് ആ ഓടി വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ മണ്ണിൽ പെട്ടത്. കുറെ പേര് പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം 10-15 പേര് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Meanwhile, the weather department sounded a red alert in Wayanad with heavy downpour recorded in the district's Manandawadi and Vaitri areas. The landslide hit the Kalladi tunnel project site in Wayanad at around 11 a.m. on Tuesday, following which a red alert was issued at 12:30 p.m. A red alert was also issued for neighboring Kozhikode district with orange alerts in Malappuram, Kannur and Kasaragod. Rescue operations at the site of the landslide are underway with teams of National Disaster Response Force and NDRF, Fire and Rescue Services, Police, Forest Department, personnel and local residents present. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday underlined how New Delhi places Asia at the core of India's Act East policy and gave a call for further strengthening the priorities of the global south. Addressing the Parliament of Indonesia, PM Modi recalled how Indonesia's G20 presidency in 2022 followed by India's presidency in 2023 brought
the conversation about prioritizing the demands of developing countries to the global forefront. He noted how India's vision of strategic autonomy and Indonesia's bebas, active, independent and active approach brings the two countries closer while addressing important global issues. लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की बेबास एक्टिव की परंपरा और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटमेंट वैश्विक विषयों पर हमें साथ खड़े होने के लिए मजबूत आधार देते हैं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहें। A seven-member delegation from Meghalaya, led by Chief Minister Konrad K. Sangma, met Union Home Minister Amit Shah in New Delhi to discuss concerns over the proposed amendments to the Foreign Contribution Regulation Act, FCRA, particularly provisions that could affect church organizations and charitable institutions reliant on foreign funding. Speaking to reporters after the meeting, Reverend Aminot T. Solia, a member of the Trust Management Committee of the Northeast India Christian Council and EICC, described the discussions as very positive and said that the delegation had conveyed its concerns to the Union Home Minister through the Chief Minister. Solia said one of the key concerns relates to the proposed Section 14B of the draft amendment, which deals with the cessation of FCRA certificates. He noted that organizations in the Northeast fear certificates could automatically lapse if renewals are delayed due to technical or procedural issues. He also raised concerns over the proposed changes under Section 16 and related provisions, stating that while the existing FCRA framework has not created major difficulties for church-run organizations, the proposed amendments could have significant implications for their functioning. The delegation urged the centre to consider the concerns of institutions in the Northeast before finalizing the proposed amendments. Our Honorable Home Minister Amit Shah ji was very positive, and we have raised some issues through our Honorable Chief Minister, Sri Konrad Sangma, and we have put points of concerns regarding the clauses that can affect the church organizations, at the same time institutions and assets of the church. Is there any other meeting being proposed? Yeah, he stated that he will call another meeting where all the stakeholders can come together to discuss regarding some those issues which you have put it up. What are the fears in the proposed amendment of FCRA? The fears first is because of there are some clauses which can affect the church organization and at the same time the assets of the church. Regarding the first, that section 14B, section 14B regarding cessation of certificate, where once the certificate expired, then the certificates will be seized. So regarding that, we the people, or we as the organization, as some of the organizations in the Northeast, especially Northeast India, we have problems regarding all those data and all, and sometimes due to technical problems, technical errors, data errors. So at the time when we file for the renewal of the certificates, and so the date expired, then it automatic will be seized. The certificate will be seized.
Sir, what are the concerns being raised by the church organization from Meghalaya? So concerns is in the proposed in the draft in this proposed FCRA amendment bills. There are some concerns, especially section 6, the whole section 16A, A to H. Regarding this existing, we don't have any problems. We have put our points of concerns to our Honorable Chief Minister. At the same time, so our Honorable Chief Minister has put those concerns before our Honorable Home Minister Amit Shahji, and it depends on the wisdom. That day, when we met the Honorable Home Minister Amit Shahji, it's very positive regarding the discussion and all, and we hope a positive response. We'll take a short break. Keep watching. बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का कायाकल्प करके हर बच्चे को निपुण बनाने का संकल्प लिया है। मिड डे मील से बचपन को पोषण मिल रहा है तथा समग्र शिक्षा अभियान से भविष्य रोशन हो रहा है। शारदा कार्यक्रम ड्रॉप आउट बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहा है और बाल वाटिका नन्हे मुन्नों को खेल खेल में स्कूल आना सिखा रहा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसिंचित। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी कारण विद्यालय नहीं जा पा रहा, तो स्कूल चलो अभियान का लाभ उठाएं। तत्काल उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय। Welcome back. Indonesia President Prabowo Subianto on Tuesday announced that Indonesia has conferred its highest honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor upon PM Modi, awarding the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor from the President of the Republic of Indonesia to the Prime Minister of India. The Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor is the highest honor in the Republic of Indonesia. The Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia is the highest honor in the Republic of Indonesia. This award is given to individuals who have rendered exceptional service to the unity, continuity and prosperity of the Republic of Indonesia. During the occasion, PM Modi said that in these times of global turbulence, India believes that the role of dialogue and diplomacy has become more critical than ever. He said cooperation between India and Indonesia on global issues is also steadily growing. There is synergy in our outlook. Regarding the Indo-Pacific as well, India has always attached special importance to Asian centrality. PM Modi earlier in the day was accorded a grand ceremonial welcome when he arrived for the talks with Indonesian President Prabowo Subianto. PM Modi arrived in Indonesia on the first leg of his three-nation tour aimed at further strengthening India's Act East policy, Mahasagar vision and its commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा
आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। An Ayodhya court has granted one-day police custody of 3 accused Lavkush Mishra, Anukal Mishra and Karunesh Pandey for further interrogating into the Ram Temple donation embezzlement case. The police had sought 7-day custody of 3 jailed accused, arguing that their custodial interrogation was required to take the investigation forward. The investigating officer Ayo told the court that questioning the accused was necessary for further progress in the case. Sri Ram Janbhoomi Tirtha Kshetra Trust has decided that Gopal Rao, also known as Gopal Nakarkate, will no longer be invited to its meetings. Mahant Kamal Nayandas, successor to Trust President Mahant Ritya Gopal Das, said that on Tuesday following a recent high-level meeting of the Trust in Ayodhya. क्या है बैठक? 3 बजे बैठक है सर। बैठक मंदिर में कहाँ पे हो रही सर? मंदिर परिसर में हो। नृत्य गोपाल दास जी करेंगे। गोपाल जी, जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, आप पर क्या कहना है गोपाल जी? इस जांच में गोपाल जी की तो कोई चर्चा ही नहीं आई है। जांच के लोगों ने ये जरूर हुआ, बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में गोपाल जी बुलाए जाते थे, ये हुआ आमंत्रित नहीं बुलाया जाएगा, बस इसके बाद और कोई गोपाल जी के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। Calcutta High Court has granted permission for former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's rally in the state capital on Wednesday over the Barupur rape and murder case. Speaking to reporters, Kalyan Banerjee informed that the student and youth wing of the TMC will carry out the procession from Balagyunge Pari to the Syama Prasad Mukherjee road crossing. Further, he accused the West Bengal police of resorting to criminal activities by arresting the party workers in the last 2 months under the BJP government. সেটা রিজেক্ট করেছিল, এর আগের সপ্তাহে রিজেক্ট করেছিল। সেটা মাননীয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অর্ডার দিচ্ছে। এখন এই বললো যে বেলা 2:30 থেকে 4:30 পর্যন্ত বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হাজরা পারমিশন। আগামীকাল যে মিছিলটা আছে 2:30 থেকে 4:30। এর আগে ছিল ওই অ্যাপ্লিকেশনে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে ঘুরে ল্যান্সডাউন মার্কেট, সেটার জায়গায় বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরামোড় পর্যন্ত মিছিলের পারমিশন দিয়েছে। রাজ্য সরকার বলতে চাইছে এখন যে শনি রোববার ছাড়া কোনো মিছিল মিটিং হবে না, কলকাতার বুকে হবে। তো আমাদের বক্তব্য জজ সাহেব যে বললাম যে সাংবিধানিক অধিকার কি শুধু সোম থেকে শুক্র সাসপেন্ডেড থাকবে না? তাহলে যদি রাজ্য সরকার সে কথা বলতে চায় কোর্টে, তাহলে তাদের একটা পলিসি নিয়ে আসুন যে শনি রোববারের বাইরে কাউকে কোনো কথা বলতে দেবো না, কেউ কোনো আওয়াজ তুলবে না। সে পলিসি নিয়ে এসো, তারপর আমরা কোর্টে যাবো, কোর্টে দেখবো। কোর্ট শুনেছে সেসব কথা করে, যেটা ওই 2:30 থেকে 4:30 পর্যন্ত পারমিশন দিচ্ছে। লোক সংখ্যাটা বলছে বোধহয় 1000-5000 হবে, লোক সংখ্যা
লিমিট করে দিয়েছে, রাস্তা যেমন থাকে রাস্তার একদার দিয়ে যাবে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি টু ল্যান্সডাউন মার্কেট দিচ্ছি আমি বেরিয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি টু ল্যান্সডাউন পারমিশন উইচ ওয়াজ শর্ট ফর বাই তুমি কি করতে বাইরে চলে গেলে কংগ্রেস তৃণমূল ছাত্র পরিষদ which was elected on 2 occasions and rally is fixed on tomorrow. After hearing it, the order is being passed now. Court has expressed its mind that the rally would be held from 2:30 to 4:30. Route is Baliganj Phadi to Hajra Mode crossing. Hajra Mode, Sama Prasad Mukherjee. We'll take another short break. Keep watching. Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI, belief called I. I can fly above imagination. ICFI. Welcome back. The Indian Olympic Association on Tuesday hosted a grand ceremonial sent-off for India's 124-member contingent ahead of the Commonwealth Games in Glasgow. During the event, the official competition kit for the Indian contingent was unveiled in the presence of several dignitaries, including UK High Commissioner to India Linda Cameron, senior officials of the Indian Olympic Association and representatives of the Government of India. The ceremony celebrated the achievements of India's athletes while highlighting the strong sporting partnership between India and the United Kingdom. Organizers also emphasized that the official kit was sustainably produced and entirely made in India. The event featured acknowledgement to sponsors including Amul and messages of encouragement for the athletes as they prepare to represent the country at the Commonwealth Games. The send-off also underscored the role of sports in strengthening international friendship, cultural exchange and cooperation while looking ahead to the 2030 Commonwealth Games, which are scheduled to be hosted in Ahmedabad. Thank you very much indeed. Honourable Ministers, distinguished guests, Dr. Usha, members of the Indian Olympic Association, athletes, ladies and gentlemen. It's such a pleasure to join you today as we celebrate unveiling the kit, but also sending off Team India to Glasgow. Firstly, I'd like to congratulate every athlete selected to represent India. Reaching this stage is such a huge achievement in itself, reflecting years of dedication, discipline and hard work. And I'd also like to recognise the coaches, the families and the support teams whose encouragement and commitment have helped make this moment possible. I am particularly delighted, as the British High Commissioner, that Glasgow will have the opportunity to welcome India's talented athletes for these Games. As you know, the UK has a proud sporting tradition, and we know the unique power of sports to bring people together across borders, cultures and communities. Sport is also such an important part of the strong ties between people in the UK and India, even when we play cricket together. Whether through cricket, hockey, athletics, badminton, or many other disciplines. I was just hearing from the Honourable Ministers about some of the other sports that India has to offer. Our two countries share a deep and enduring connection. And our bilateral sports partnership continues to grow, spanning elite performance, sports governance, major events delivery, and grassroots participation, creating opportunities for athletes and communities in both countries. So the Commonwealth Games in Glasgow will not only showcase athletic excellence, but also the friendship, mutual respect and camaraderie that defines the Commonwealth sporting family.
And of course, then, as we look to the future, there's real added significance to these games because India is preparing to welcome the Commonwealth sporting community in Ahmedabad for the Centenary Games in 2030. And so we're very excited that Glasgow will be such an amazing milestone on that journey, not only for many of the athletes competing this time, but also for India more widely. Kate unveiling and send-off ceremony कॉमनवेल्थ के गेम्स के लिए उस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी, मेरे सीनियर कलीग आदरणीय गिरिराज सिंह जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित एक्सलेंसी लिंडी कैमरान, ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Good night.